Hey guys, hello. Hello everyone. Let me set things up. Great. Let's wait for another 10, 15 seconds, probably 30 seconds for others to join up so that we're in a good position over here. I think just we'll just wait for 1.5 minutes. That's not more than that. Let me see. Is there anyone who is in line? Let me see. Okay. This is interesting. Contracting data over here. No worries, no worries. I think we are in a position now. I think we fine. Until others join in, I think we can do a bit of revision of what we have done in yesterday's class. I think in yesterday's class we talked about this thing. We talked about data cleaning using Power Query Editor, and I think we did half of the job, and the other half was remaining. And I intend to complete the other half today. Okay, so I'll just open the Power Query Editor. I'll go for Power. I'm sorry, yeah, Power BI Desktop. Let me start with that because I would require the file in which I'm working, right? So I'll just open it up. Let me open this up. I'll take some time. I don't know why is it taking some time. And I'll share my screen. How can I forget? I forgot to share my screen. No worries. I think I'll go for the screen. Right. Now you can see it over here. Yeah, excellent. You can now see it, right? So this is the file that we created, YT live session web scraping. In this file, what we did was we took some data from, you know, data from Flipkart.com, and we took some mobile data and we were cleaning that data. That's what we were doing, right? And we've seen how can we append data, that is page one and page two of the two data sets they're taken, and then using these, how can we append the data, that is how can we join the data, we can put one data on top of the other one, right? So let me start with this. Now if I go for final data and let me see this, I think let me go to the table view, and this is what we've done. So I think till yesterday what we have done is we segregated brand, product color, offer price, original price, discount, all from this were all sorted. And I think from memory onwards, I think memory, screen data, camera, and yes, battery, then ratings, and number of ratings and reviews is something that we were left with. And हमें क्या करना था, इसको हमें क्लीन करना था, और क्लीन क्या करना है, थोड़ा अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करनी है, फीचरिंग करनी है, राइट? आई एम डूइंग मोर डेटा रैंगलिंग ओवर हियर रादर देन डेटा क्लीनिंग. ओके, सो अब इस पे क्लीनिंग करने के लिए एक आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड. मैं क्या करता हूँ, मैं आपको क्लियरली एक ब्लैंक बोर्ड पे आई जस्ट टेल यू व्हाट वी डिड यस्टरडे, है ना? आई जस्ट so that everybody is on course, everybody is watching this on a recorded version, or everybody who plans to watch this or planning this live as well, or sorry, watching this live as well, present audiences and future audiences, right? Now what we did yesterday was, I think you can just see the video that we uploaded yesterday. Okay, it was web scraping, and I think the title was the same thing. I think we're talking about data cleaning and data modeling, but I think we did a bit of web scraping over there as well. So we went to Flipkart mein gaye hum, right? And in Flipkart we saw all the 5G mobiles data, right? 5G mobile data. What we did was, this is the link. If I'm not wrong, will it give me the link? Let me see. Let me see. Okay, I think. Let me put it up over here. And yeah. So we went to Flipkart. Okay. And we searched for all the 5G mobile phones over here.
came this link in which there is a list of all the 5G mobile phones. What we did was, using this link, we imported this data into Power BI. We imported this data into Power BI, and we got two pages data, page one and page two. Page one and page two were then combined to give me final data, right? I think all this can be seen very easily in Power Query Editor. एक काम करते हैं हम लोग, पहले Power Query Editor में एंटर कर जाते हैं, राइट क्लिक करता हूं मैं, I'll go for edit query. Just a minute, please. Just a minute. I think my charger is failing me. Okay, just a minute. Give me a minute, please. Okay, yeah, sorted. Excellent. Great. So I think now we can continue. Apologies for that. So I think that's what we did, right? So we went to this, and a bit of, this is my Power Query Editor. And if I just tell you what we did, we went to Flipkart, took this data, and यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने थोड़ा सा और चीजें करी थी. We started cleaning the data, we started prepping the data using Power Query Editor. Power Query Editor से हमने क्या करा था, clean भी करा है data. What kind of cleaning have we talked about? We actually extracted data from it. But if you want to see what kind of data we downloaded, the data was something like this. So data was, it had product, offer price, original price. So from product only, we were able to extract the name of the brand, the name of the product, and the color, right? This is what we did in final data. So name of the brand, the product, and the color. These three columns we made out of one column over here. Okay. So this is what we did, because now I'll be able to, do my analysis as per the brand over here. Okay. And then I went for product color, offer price, original price over here, and memory. This is the memory over here. And now we are starting from memory. Today we'll start from memory. That is, I want this 8 GB RAM. There's a RAM memory, there's a ROM memory, and there's an expandable option over here as well. Right. So we'll just move it over here today. Right, we saw camera, we saw battery. I think we are yet to do the cleaning over here as such. Okay, so I think we use very simple thing over here. We use split column using a delimiter. I think we use that. I think plenty of things are still left. I think we used a bit of append queries. हम होम टैब में ही थे, होम टैब से हम आगे नहीं बढ़े, हम ना होम टैब से हम लोग आगे नहीं बढ़े, हम होम टैब में ही थे अभी तक. हम पावर कोरिडोर के होम टैब में ही हैं. ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू, इन सब में मैं आया ही नहीं हूं. सो इसमें आ जाऊंगा मैं. आज इसको हम खत्म करेंगे एंड विल सी almost the entire scope of Power Query Editor, what Power Query Editor as a very, very strong tool can do for me as a data analyst. Okay, as a data analyst, Power Query Editor क्या क्या कर सकता है. Okay, now brand, product color, offer price, original price. This is what we had over here. Right now, राइट. सो हम लोगों ने सब कुछ करके रखा हुआ है. और फाइनल डेटा इज दैट अपेंडेड डेटा. फाइनल डेटा क्या था, वो अपेंडेड डेटा था. पेज वन, पेज टू, पेज वन का डेटा, पेज टू का डेटा एक दूसरे के साथ मैंने क्या कर दिया था, अपेंड कर दिया था. और थोड़ा बहुत हम लोगों ने अपेंडिंग क्या होता है ये इस चीज के ऊपर भी बात करी थी. अपेंडिंग मीन्स वन ब्रिक लेड ऑन टॉप ऑफ द अदर वन. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ अपेंडिंग ओवर हियर. ओके, राइट. Now let's move on to memory. Now once I move on to memory, अब मुझे मेमोरी में क्या चाहिए. अब मैं फिर से वही कर रहा हूं. मेरे को अपना जो काम का डेटा है ना वो एक्सट्रैक्ट करना है. I need to extract the data which I think will be helpful to me. पूरे डेटा में may I suggest only 8 and only 256 is something which is worth this thing extracting. Okay, but थोड़ा सा इस कॉलम में there is a how should I say, I should not say risk नहीं बोलना चाहिए, but थोड़ा सा problems है, because I can definitely split the column just like we did yesterday by using this particular vertical line. I think this is just above the enter key on your keyboard, and you can see it over there. Shift and then the key above the enter key is going to give me that particular symbol. But दिक्कत क्या है, कुछ जगहों पर ये 128 GB ROM है, यहाँ RAM डेटा ही नहीं दिया हुआ है.
या मुझे रैम डेटा ही नहीं दिया हुआ है, जस्ट रॉम डेटा दिया हुआ है. आई थिंक आई कैन सी 5 to 6 such occurrences over here. Just ROM is given. Now if I go to split column, मैं क्या करता हूं डेलिमिटर से, सबसे पहले क्या करता हूं, यूज अ डेलिमिटर, और मैं स्पेस यूज नहीं करता. मैं बोलता हूं आई वांट टू गो फॉर कस्टम डेलिमिटर, मैं अपना खुद का सिंबल यूज करूंगा, और वो सिंबल है ये वर्टिकल लाइन. एंड आई एम सेइंग दैट व्हेनेवर इट इज अकरिंग स्प्लिट इट अप. बिकॉज अगर आप देखोगे तो इस कॉलम में ये 8 GB रैम, इसके लेफ्ट में भी चीजें चाहिए, इसके लेफ्ट में भी वाली चीजें भी चाहिए, और ये एक्सपांडेबल अप टू 1 TB ये भी मुझे चाहिए. All this is information about that particular product. So I don't want to leave it. I'll just click on this, go to delimiter. I'll say that custom use करता हूं मैं. Custom में मैं क्या use कर रहा हूं? Custom में I'll use this particular part over here. Each occurrence of the delimiter. मैंने क्या करा? ओके कर दिया. ओके करने पर क्या है, हर बार जब वो डेलीमीटर आया होगा ना, जहां जहां पर वो डेलीमीटर आया होगा, वहां वहां पर स्प्लिट हो गया है. बट इससे एक गड़बड़ हुई है. वो गड़बड़ ये है कि ये 128 GB ROM, राइट, ये जो यहां आना चाहिए था वो यहां आ गया, बिकॉज देयर वाज नो ऑकरेंस ऑफ दैट वर्टिकल लाइन, सो देयर वाज नो स्प्लिट हैपेंड ओवर हियर. दैट्स द प्रॉब्लम. व्हाट आई नीड टू डू इज, थोड़ा सा मुझे इसको चेक करना रहेगा. तो उस चीज को चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं, दिस इज माय मेमोरी, आई गो फॉर, आई कॉल इट RAM. This is the RAM memory of the phone. Okay, this is the RAM of the phone. This is ROM of the phone, right? And this is my expandable memory. Okay, I'll go for expandable only. Now एक ही चीज मुझे देखनी है, वो ये कि 128 GB ROM यहां पर आ जाए. उसके लिए मुझे आई कैन नॉट जस्ट डू दैट ऑल द एक्सेल शॉर्टकट्स. अगर आप Ctrl+R Ctrl+D ये सब सोच रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज this is Power BI. I think I've repeatedly told you guys that this can't be done over here. So 128 GB ROM को अगर मैं यहां मूव करना चाहता हूं तो उसका एक ही तरीका है, यहां पर नल वैल्यूज, हर नल वैल्यू को मुझे क्या करना है, 128 GB ROM में कन्वर्ट कर देना है. नल वैल्यू आया ही इसलिए है क्योंकि ये 128 GB ROM जो यहां आना था वो यहां नहीं आया, यहां पर आ गया. So what I'll do is, in this column I'll just replace null values. So I'll use what? Replace values. यहां पर जो ट्रांसफॉर्म है मेरा, इस पे मैं ट्रांसफॉर्म टैब में डेटा ट्रांसफॉर्म करने के सारे जो भी ऑप्शंस रहते हैं वो ऑप्शंस आपको यहां पर मिल जाएंगे, राइट? जस्ट लाइक स्प्लिटिंग द कॉलम. ग्रुप बाय हम थोड़ी देर में आके देखेंगे व्हाट यू मीन बाय ग्रुप बाय. देन यू हैव डेटा टाइप टेक्स्ट, right? And I will see what is the meaning of using first row as headers. Right now let me use replace value. I'll click on replace value. I'll go for null and I'll go for 128 GB and ROM. वैसे से कोई खास फर्क पड़ा नहीं क्योंकि ये GB ROM भी मैं हटा दूंगा. Make sense now. And yeah, ठीक है, fair enough. Nice, good. एंड यहां से रैम से मैं रैम में जहां जहां पर रॉम आ रहा है वो हटा देता हूं. ओके, सो आई जस्ट गो फॉर रिप्लेस वैल्यूज एंड आई जस्ट डू द अपोजिट ओवर हियर. 128 GB ROM जहां जहां पर मिल रहा है उसकी जगह पर क्या डालना है? एब्सोल्युटली नल, नथिंग, राइट? सो आई जस्ट रिप्लेस इट और यहां पर क्या आ गया? नल आ गया, खाली हो गई वो जगह. ऑलराइट, are we clear with this? That is the meaning of RAM over here. Now I'm still not satisfied because ये तो मुझे कॉलम से ही पता चल रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम मेमोरी है. तो ये मुझे रैम वर्ड का मतलब क्या कोई मतलब है इसका यहां पर होने का? नहीं. इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं और बोलूं कि रैम में ही मैं यहां पर यूनिट डाल देता हूं, जीबी, सो कैन आई से दिस कॉलम रिप्रेजेंट्स रैंडम एक्सेस मेमोरी इन जीबी. सो अब मेरे को ये जीबी और रैम की कोई जरूरत ही नहीं है ना. कैन आई से दिस? सो आई जस्ट गो फॉर दिस रिप्लेस वैल्यूज और यहां पर मैं क्या बोलता हूं, ये जो जीबी रैम है इसको फिर से रिप्लेस कर दो किसी चीज से. जस्ट रिप्लेस दैट. अब या फिर ये कर सकता था मैं, या फिर मैं कॉलम को फिर से स्प्लिट कर दो बाय डेलीमीटर. एंड डेलीमीटर में क्या स्पेस से ही कर देता हूं, लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर यूज करता हूं क्योंकि 8 के ठीक बाद वाला चाहिए डेलीमीटर मुझे. एक क्लिक करके ओके कर दिया और यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं. ये भी एक तरीका था. ओके, ऑलराइट. सो जब इसको क्लिक करता हूं मैं, आई थिंक दिस इज अ होल नंबर. आई थिंक दिस इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज अ होल नंबर ओवर हियर. ओके, सो ये होल नंबर है भाई.
what is 8 representing over here? 8 is nothing but the number, is the RAM, RAM size. So 8 GB का RAM है ना, 8 GB का RAM है इसका. This is 8 GB RAM over here. This is 12 GB RAM, and I mean we can see, right? These are all RAM values. Null means the data is not present over here, which is absolutely fine. ROM में अगर मैं आता हूं, now if I go to ROM over here, okay, I'll do the same thing. I'll do one thing. I will replace values over here. Replace values with what? 126 GB ROM. I'll go for GB ROM. Okay. And I'll go for this. I'll go for OK. So this is GB ROM. GB ROM is gone. बट ये जो रिप्लेस करने से क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली जो है ना, ये अब नाउ दिस इज नथिंग बट दिस ROM इज नाउ ऑल्सो in GB. So मैं यहाँ पर unit लिख दूंगा so that that confusion will not be there that whether it's in GB or is it in some other unit. Okay. So I'll go for this. So GB हो गया. But इससे एक चीज हुई है. If I replace value, it doesn't automatically convert the rest of the left out value over here, which are numerical value, into a numerical value. Okay. So वो चीज यहाँ ये नहीं कर रहा. Anyways, एक चीज और मुझे नजर में आई यहाँ पर. आई थिंक आई ट्राई एंड मैं चाहता हूं कि आप वो उस पर ध्यान दें. कैन यू जस्ट ऑब्जर्व समथिंग इन दिस कॉलम? 256 256 1 इस ये 128 और इस 128 में कोई फर्क देखिए जरा, इस 128 में और इस 128. लुक एट दी, if I just select the 128s over here, can you just see this 128 and this 128? What is the difference over here? The difference is all these numbers have a space just in front of them. Have a space in just front of them. और ये मैं नहीं चाहता. बहुत सारे केसेस में मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि डेटा में ऐसा कुछ हो कि instead of 128 the data should read like space 128. I don't like that, right? So what I do over here is I'll click on this and I will have to trim out the spaces. और उसका भी एक तरीका रहता है. मैं थोड़ा क्या रैंडमली चलूंगा गाइस. यहाँ पर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ट्रांसफॉर्म टैब पे. सो पहली बार ट्रांसफॉर्म टैब पे आते हैं और ट्रांसफॉर्म टैब पे दिस इज टेबल रिलेटेड स्टफ, दिस इज कॉलम रिलेटेड स्टफ, ओके, दिस इज टेक्स्ट कॉलम रिलेटेड स्टफ एंड दिस इज नंबर रिलेटेड स्टफ. टेक्स्ट कॉलम में आता हूं बिकॉज अभी तो ये टेक्स्ट कॉलम है, इसको कन्वर्ट करना मुझे न्यूमेरिकल में क्योंकि नंबर्स ही बचे हैं अब यहाँ पर. अभी तो लेकिन टेक्स्ट है ना. तो ये टेक्स्ट कॉलम में मैं क्या करता हूं, एक्सट्रैक्ट करता हूं. ओके, आई डू नॉट वांट टू एक्सट्रैक्ट राइट नाउ. मैं सॉरी, इन दोनों गलत जगह पे क्लिक कर रहा था. आई क्लिक ऑन फॉर्मेट. इन फॉर्मेट अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन ऑन टेक्स्ट डेटा. बड़ी मजेदार चीज रहती है, राइट? नाउ अपार्ट फ्रॉम लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, इसको यूज करेंगे आगे जाकर. बट ट्रिम एक बहुत बढ़िया चीज है. ट्रिम क्या करता है, टेक्स्ट से, उस पर्टिकुलर सेल के टेक्स्ट से आगे के और पीछे के सारे स्पेस क्या कर देता, हटा देता, राइट? It just, I think I just clicked on trim. I think I just clicked on trim. So that is why क्या हो गया, I think ये 2 बार हो गया. ठीक है, हटिए. मैं trim एक बार undo कर देता हूँ, है ना, undo कर देता हूँ. And if I just click on this, I'll say that format में click करता हूँ, trim पे click करता हूँ. What happens over here is that as you can see now all the numbers are on the same line. Let me do it over here as well. If I go for this, not split actually, format and trim, right? The numbers are basically trimmed over here. Oops, I think यहाँ पर नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये फिर टेक्स्ट बन गया, ये एक्चुअली नंबर था. Absolutely fine. Now once I've done the trimming, what I can do now, guys, is I can click on this ABC and tell Power BI that this is now a whole number. This is no longer a text. अब ये टेक्स्ट नहीं रहा. Hey, hi Sangram, hello, hi. Now अब मैं आता हूं, दिस इज ROM. सो अब यहां पर मैंने ROM निकाल लिया, राइट? सो दिस इज जस्ट द मेमोरी कॉलम. ये पेज 1 पे जाता हूं तो आई थिंक, उप्स, 2 दिन पुराना कैसे हो गया भाई, कल ही तो लिया था डेटा. कोई बात नहीं, एनीवेज डजंट मैटर मच. Oops, something just happened over here. Apologies for that.
I think I should not have refreshed that, but ठीक है, no worries. I think we haven't lost anything. All right, so this is the case over here. Final, this is my brand. Okay, very interesting. Right. So these are all my brands. All right. Now the good thing is the data will I think the data has just refreshed over here based on whatever have come in the first page. I just saw a bit of refresh over here because if I recall correctly, I think it started with Oppo. Okay, the moment I clicked on refresh, whatever the page reflected now, the data is also reflecting over here. Okay, so that's the cool thing about Power BI. Anyways, now we can see the GB over here. These are all ROMs. Okay, now let's go for expandable. Now expandable में क्या देख रहा हूँ? Expandable में मुझे देखना है कि what is the expandable capability over here. And I saw that few of them are expandable, the other one are not expandable. And expandable का जो मेरा unit आ रहा है, the unit is TB, terabyte. Terabyte में ही expand हो रहा है ये. So I'll go for this and I'll go for TB, terabyte. And now what I can do is I can now split this column. And in fact split भी क्यों करना, एक काम करता हूँ, replace कर देता हूँ. I'll replace this. I'll go back to home tab over here and I'll go to something called as replace values. और ये जो expandable up to 1 TB है ना, expandable up to, ये expandable up to को I'll replace expandable up to. Okay, with what? Absolutely nothing. मैंने बिल्कुल ब्लैंक चीजों के साथ इसको रिप्लेस कर दिया है. I'll click on OK. Now this comes out to be 1 TB. Now what I need to do is to replace again and again go for TB. And TB should also be replaced by OK, because TB भी नहीं चाहिए भाई मुझे, क्योंकि मैं तो ऊपर लिख चुका हूं that expandable, the unit over here is TB. और यहां पर भी मुझे दिख रहा है भाई, if I just click on this, if I go to transform, click on format over here, trim कर देते हैं इसको भी. We just did trim a few minutes ago because trim removes the space from left and right. Okay. Now if I do this, as you can see, all the ones moved a bit towards the left one. Now the only thing remaining now is to convert this into, it's right now reading this data as text because that was the original type of column. But text नहीं करना है मुझे, यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसको whole number बनाना है. I'll just click on whole number. So memory sorted, memory भी कर लिया भाई हमने. I think I'll have to do the same with screen data and camera. Right? So screen data में मुझे क्या चाहिए? I just had a look at screen data. Okay, screen data gives me the screen size first in centimeter, then inside bracket in inches, and then it gives me what kind of display does it have. Okay, so it gives me display, HD plus display, HD display. So display means nothing over here. I think the first thing that I'll do is ये सेंटीमीटर के बाद से ना मैं स्प्लिट कर देता हूं इसको. Can I say this? Fair enough, no? I'll split it up. I just need that 16.94, 16.94, 17.02. ये वाला डेटा मेरे ज्यादा काम का आएगा क्योंकि now, I mean, once I'm done with this, I can see that Redmi, on an average, what is the screen size that Redmi offers? On an average, does Redmi offers bigger screen size or Oppo or Vivo? Which one offers bigger screen size? Okay, देख लेते हैं हम. So यहाँ पर क्या करता हूं मैं, स्क्रीन डेटा को क्लीन करना है मुझे. क्लीन क्या करना है, फीचर करना है मुझे यहाँ पर. दिस कॉल्ड एज डेटा फीचरिंग. मेरे को ये जो स्क्रीन साइज का 16.94 वाला पार्ट है बस वो निकालना है. अगेन माय फ्रेंड इज स्प्लिट कॉलम. आई विल गो टू डेलीमीटर. और इस बार मैं डेलीमीटर को ना बड़ी समझदारी से चूज करूंगा बिकॉज डेलीमीटर मैं कम से कम एफर्ट में उसको सेग्रीगेट करना चाहता हूं. ओके, सो आई कैन गो फॉर लेट्स से कस्टम ओवर हियर. और कस्टम में मैं क्या डालता हूं यहां पर, ओपन पैरेंथेसिस. ओपन पैरेंथेसिस मतलब लेफ्ट मोस्ट ले लेता हूं, मतलब ये लेफ्ट से चलते जाएगा और जहां उसको ओपन पैरेंथेसिस दिखा वो क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा यहां पर डेटा, है ना? राइट, सो आई जस्ट डू दैट. अब इससे क्या हो गया, ये जो स्क्रीन डेटा 1 है, ये क्या हो गया, स्क्रीन डेटा 1 जो है
दिस इज गिविंग मी, एक्चुअली दिस इज नॉट स्क्रीन डेटा, दिस इज स्क्रीन साइज। और ये साइज मुझे किस में मिल रही है? मुझे तकरीबन हर चीज सेंटीमीटर में दिख रही है। कैन आई सी इट इन सेंटीमीटर? ऑल ऑफ देम आर इन सेंटीमीटर। अगर मैंने यहाँ सेंटीमीटर यूनिट ऊपर ही डाल दिया है, देन मुझे यहाँ पर सेंटीमीटर की जरूरत ही नहीं ना नीचे। I'll do one thing. I'll say that let's go back to home tab. I'll use replace values again. और मैं यहाँ पर ये जो सेंटीमीटर है इसको रिप्लेस कर दूंगा किस चीज से? किसी भी चीज से नहीं, एकदम ब्लैंक से। सेंटीमीटर इज ऑल्सो गॉन। चाहो तो ट्रांसफॉर्म में जा जाइए, थोड़ा सा फॉर्मेट में आ जाइए और ट्रिम कर दीजिए। अगर आसपास कोई स्पेस होगा तो ट्रिम आउट हो जाएगा। एंड देन क्लिक ऑन दिस एंड मेक इट अ फिक्स्ड डेसिमल नंबर। दिस इज नो लॉन्गर अ होल नंबर गाइस। अगर आपने यहां पर होल नंबर पे क्लिक कर दिया तो ये सब अप्रोक्सीमेट होके अगले होल नंबर पर पहुंच जाएगा, और 16.5 और 16.9 पे कोई फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे? 17 बन जाएंगे, जो ठीक नहीं है मेरे लिए। What I'll do is I'll say that नहीं 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 नहीं, ये नहीं चाहता मैं। So I'll say that let's not do it. I'll say that keep the decimal. I want the decimal numbers over here. Because 16.51 and 17.02, the difference is substantial, isn't it? आधे इंच का गैप मतलब बड़ा होता है स्क्रीन साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। So I'll go for something like fixed decimal number. This is my fixed decimal number. 2 decimal number ही रखने हैं मुझे। Okay. अब यहां पर मुझे क्या करना है? देखिए यहां पर क्या करना है मुझे, ये अभी 6.67 इंचेस, ये जो इंच में जो डेटा दिया हुआ है इसकी कोई जरूरत ही नहीं है मुझे, है ना? क्योंकि सेंटीमीटर में तो मैं डेटा देख ही रहा हूं ऑलरेडी, और सेंटीमीटर में देखो या इंच में देखो, द डेटा रिमेन्स द सेम, isn't it? It's just a matter of unit. So I want to ignore this inch wala portion over here, because I do not want the screen size to be seen in two different things. दो अलग अलग चीजों में स्क्रीन साइज नहीं देखना चाहता मैं यहाँ क्या करता हूं, होम पे आता हूं, स्प्लिट कॉलम, अगेन डेलीमीटर को यूज करता हूं मैं, कस्टम डेलीमीटर लेता हूं, दिस वन, राइट। आई गो फॉर दिस, एंड ये वाला कॉलम जो है ना ये मेरे को चाहिए ही नहीं, पूरा का पूरा राइट क्लिक करता हूं, आई रिमूव दिस। ओके, इस पे आता हूं मैं, इस कॉलम पे, और फिर से मैं ट्रांसफॉर्म पे आके क्या करता हूं, ट्रिम कर देता हूं, सो दैट आसपास का अगर कोई स्पेसेस है तो हट जाए। नाउ आई जस्ट हैड a glimpse on this particular column. What is this giving me? This is the screen type. Can I just see? This is full HD plus, HD plus, full HD plus, and display is just the word over here. It's not giving me a type of screen. So there's a full HD plus, there's a HD plus, there's a Super Retina XDR display, but all of them are nothing but display data, right? So I'll go for this thing. I'll just double click over here, और इस कॉलम को मैं क्या कर देता हूं, डिस्प्ले कर देता हूं, डिस्प्ले वर्ड पे कर देता हूं। दिस इज माई स्क्रीन डिस्प्ले टाइप। आई गो फॉर स्क्रीन डिस्प्ले टाइप, राइट, स्क्रीन डिस्प्ले टाइप। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं डिस्प्ले वर्ड ही हटा दूंगा इसमें से, मैं इसमें से डिस्प्ले वर्ड ही हटा दूंगा। I'll click on this, I'll go for this, and I'll say that let's go to home, replace values, I'll go for display, and display पे करके हटाई दिया इसको। ओके, ओके पे क्लिक कर दूंगा मैं, दैट वे डिस्प्ले हट जाएगा और मेरे पास साफ साफ दिख रहा है किस टाइप का डिस्प्ले है यहाँ पर। दिस इज फुल एच डी प्लस, फुल एच डी प्लस, देन दिस इज सुपर रेटिना XDR, then super retina XDR, then all these kind of things are there, right? That's what we have. So screen भी sorted है भाई, स्क्रीन की साइज भी निकाल दी मैंने, किस टाइप का डिस्प्ले है वो भी निकाल दिया। We can have a count over here as well, isn't it? What kind of display are we looking at? अब आता हूं कैमरा पे। लेट मी मूव ऑन टू कैमरा नाउ। आई क्लिक ऑन कैमरा, एंड कैमरा में आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, because I can see this is front camera and then obviously rear camera. So there are two types of camera I can see over here. One is front camera, the other one is rear camera. And I think front camera is okay because there is only one front camera in most of the cell phones. But the rear camera, there might be more than two rear camera over here. इसका क्या करूँ मैं? अब मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल
I want the number of information to be how many cameras are there. I want to capture everything. Rear camera 1, rear camera 2, rear camera 3. कहीं कहीं पर रियर कैमरा 3 आएगा ही नहीं, कहीं कहीं पर रियर कैमरा 2 भी नहीं आएगा, हो सकता है 2 कैमरे भी ना हो, ओनली 1 कैमरा हो. राइट, हाउ शुड आई हैंडल दिस डेटा? कैमरा के कॉलम में पूरे के पूरे पूरा कैमरा से ऑल द एंटायर डिटेल ऑफ कैमरा हैज कम अप ओवर. कैमरा से रिलेटेड जो जो मिला उसने इस कॉलम में डाल दिया. मतलब आप देखेंगे ये क्या है, फ्रंट कैमरा है, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा. देन वी हैव 200 मेगापिक्सल OIS प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल as 3 rear cameras. Similarly the same thing over here. यहां पर 2 रियर कैमरा है, यहां पर भी 2 रियर कैमरा है, यहां पर भी 2 रियर कैमरा है और एक फ्रंट कैमरा है. मुझे ये भी सब कुछ कैप्चर करना है. मुझे ये देखना है कितने रियर कैमरेज हैं, कितने फ्रंट कैमरेज हैं. ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ आई नीड टू कैप्चर. राइट, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फ्रंट और रियर को सेपरेट करता हूं. आई वांट टू सेपरेट आउट फ्रंट एंड रियर. अगेन स्प्लिट कॉलम, उसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है. I'll go to split column over here. I'll use a delimiter, and that delimiter will be he order. उसने देख लिया, समझ लिया उसने delimiter कौन सा यूज करने वाला हूं, उस ये वाला delimiter यूज करने वाला हूं. And he's saying that each occurrence of the delimiter. I said okay भाई, use the same delimiter. इससे क्या होगा, कम से कम मेरा rear camera और front camera तो अलग अलग हो जाएगा. I'll go for this as rear camera, and I'll go for rear camera 1. Rear camera 1, and this is my, or not exactly rear camera 1. अभी तो ये पूरा का पूरा rear camera की डिटेल ही दे रहा है ना, तो अभी 1 नहीं लिखता. This is my rear camera, and this is my, or a more appropriate name would be camera and underscore rear. See, the reason is, understand, even if you name a column, naming a column is very very important as well. It has to be done logically. Camera rear indicates that the information is about camera. Which camera? Rear camera. So the secondary question should be followed later, right? The first question is column mein kis cheez ki information? I answered that the information this column consists of is of camera. Then I answered the next question, which type of camera? That is rear camera. That is the logic behind making it camera rear. And this is my camera underscore front. Okay, camera rear, camera front. Front is okay, front is handleable because दोनों क्या है, मेरा मेगापिक्सल में ही है, right? So I'll go for this as camera rear MP megapixel, है ना? Fair enough. And I think this is also MP megapixel. I think megapixel के आगे तो अभी कोई यूनिट आई नहीं है कैमरा में, right? Now everything is sorted over here. Let me go for the easier column first, which is my front camera. Front camera में मुझे सब कुछ डिलीट कर दे, मेरे को बस ये 16 का नंबर चाहिए. That's all I need. Can I say this? I just need that 16 number because I know that this is front camera in megapixel. I have the unit as well. So what I'll do is I'll again use replace values. I'll go for megapixel over here. और अच्छा, बार बार replace values क्यों करूं? I'll go to transform and I'll start using some other functions over here as well. For example, let me extract. Extract means it extracts something from the text. Now this is a text. I'll extract something. What is it that I want to extract? I want to extract a certain portion of the phrase. Rest of that can be deleted. Okay. So I'll go for extract. I'll say that, do you want to extract based on length or first characters or last characters or range? और यू कैन एक्सट्रैक्ट अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट. टेक्स्ट का कोई भी पोर्शन है ना, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेलीमीटर से भी. सो जैसे अगर आपने यहाँ बोला टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, तो किसी डेलीमीटर से पहले का जो टेक्स्ट है ना वो आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसको यूज करा और इसको मैं यूज करना चाहता हूं टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, देन अगर आपने डेलीमीटर दिया स्पेस, अगर आपने डेलीमीटर दिया स्पेस, तो जो पहला स्पेस पकड़ेगा और उसके पहले सारा का सारा जो टेक्स्ट है दैट इज 16 मेगापिक्सल ले लेगा वो, है ना. फॉर एग्जांपल, इफ आई यूज द डेलीमीटर एज स्पेस, ना यहां पर लिखना नहीं है, यहां पर मुझे डेलीमीटर टाइप करना है. सो स्पेस मींस
I hit a space bar, that's it. And if I click on OK, oh, I'm so sorry, यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, पूरा का पूरा डेटा चला गया। क्यों? क्योंकि क्या हुआ है, पहला स्पेस जो उसको मिला ना वो यहां पर मिल गया है, 16 से भी पहले स्पेस मिल गया है। तो स्पेस से पहले 60, पहले स्पेस से पहले कुछ था ही नहीं, तो उसने पूरा का पूरा डेटा उड़ा दिया। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम फॉर्मेट में जाते हैं और मैं पहले ट्रिम कर लेता हूं। सो ये होता है क्या, आसपास उसके बगल का जो स्पेस है ना वो हट जाएगा आपका। नाउ इफ आई अप्लाई एक्सट्रैक्ट एंड से दैट टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, और अब देता हूं स्पेस, तो अब पहला स्पेस उसको कहां मिलेगा, ये 16 या 8 मेगापिक्सल के पी के बाद वाला स्पेस। इफ आई क्लिक ऑन ओके, ये एक्सट्रैक्ट हो गया, बाकी सब हट गया, ये एक्सट्रैक्ट हो गया, बाकी सब हट गया, राइट? Are we clear with this? I think this is very, very important. This is textual data cleaning. Now, if I look at it, सर आई जस्ट अंडू दैट, मैंने वो स्टेप क्या कर दिया, अंडू कर दिया यहां पर अप्लाइड स्टेप्स में से। क्यों? बिकॉज आई थिंक डायरेक्टली कर सकता हूं, मेरे को अब ये एमपी अल्फाबेट्स की जरूरत नहीं है ना। आई नो दैट कैमरा, फ्रंट कैमरा इज इन मेगापिक्सल ओनली। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं एक्सट्रैक्ट में जाता हूं, मैं टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर ही बोलता हूं, पर मैं डेलीमीटर बदल देता हूं, मैं डेलीमीटर बोलता हूं एम, ये कैपिटल एम। सो कैपिटल एम के पहले जो कुछ भी होगा विच इज जस्ट द नंबर विल कम, रेस्ट एवरीथिंग इज गॉन, रेस्ट एवरीथिंग इज not required. I'll go for capital M. If I go for OK, I'll immediately get only the numbers. और बाकी सारी चीजें उसने अलग से कहीं स्टोर नहीं करी है, वो उसने सिर्फ क्या कर दिया, भगा दिया उसको। That is, I do not want that. I remove that particular part. That's what extract does. Extract just extracts a part of the text over here. I click on ABC and I say that this is a whole number. And now I can see that this is my front camera. But this was easy. This was quite easy, isn't it? This will be slightly difficult because मुझे एक तो ये भी देखना है कि कितने रियर कैमरास हैं, मुझे कोई भी कैमरा की इंफॉर्मेशन भी नहीं जानी चाहिए, और मुझे वो एमपी वाले फ्रेजेस भी नहीं चाहिए, बिकॉज आई नो दैट द कैमरास यूनिट इज मेगापिक्सल। I'll click on this and the first thing that I need to do is to separate this out. अब मैं यहां पर क्या डेलीमीटर यूज करूंगा, थिंक अबाउट इट, व्हाट काइंड ऑफ डेलीमीटर विल आई यूज ओवर हियर? मैं क्या करूं, कौन सा डेलीमीटर यूज करूं यहां पर? I'll just wait for 30 seconds, guys. I think there's a 15-second lag between us talking, but you know, we can change that. Let me try and change it. Can I change it? Let's see. I don't think so now. चलिए जाने दीजिए, यू गाइस फोकस ऑन दिस थिंग। अब मैं क्या करूं, मेरे को क्या चाहिए, जितने भी रियर कैमरा है ना वो सारों की इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेट। सो आप बोल रहे हो ओपन पैरेंथेसिस, सो ओपन पैरेंथेसिस हर जगह पर थोड़ी है, लेकिन प्रद्युम्न, और वो ओआईएस तो शायद मैं रखना चाहूंगा या नहीं रखना चाहूंगा, बाद में देखते हैं। पहले तो मुझे ये देखना है दैट कितने कैमरास हैं, और वो कितने कैमरा मुझे, अच्छा आप बताइए कैसे पता चला कि कितने कैमरा, हाउ मेनी रियर कैमरास आर देयर, किस चीज से पता चल रहा है, किस चीज से पता चल रहा है कि हाउ मेनी रियर कैमरास आर देयर? Plus, exactly. Plus is telling me how many rear cameras are there, isn't it? Now using that I can see, now मैं इसलिए क्या करूंगा, यहां पर स्प्लिट करूंगा। I'll go back to home, I'll split column by delimiter, एंड इस बार मैंने डेलीमीटर क्या, वो खुद ही समझ जाता है। देखिए पावर बीआई, इट्स अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, नो, वो क्या है, समझ जा रहा है कि भाई ये प्लस से ही करना चाह रहा होगा। आई क्लिक ऑन ओके। अब मेरे क्या हो गया, प्लस से मैंने पहला प्लस जो मिला उसने स्प्लिट कर दिया। यहां पर फिर मैं वही करूंगा, आई गो टू स्प्लिट कॉलम, डेलीमीटर, एंड आई से दैट ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर, पहले यही करना चाहिए था मुझे। एक काम करते हैं, सॉरी माय बैड, आई अनडू दिस। इनफैक्ट ये वाला भी अनडू कर देता हूं मैं बिल्कुल पहले वाला। अब या इस वाले, यही था मेरा ओरिजिनल कैमरा वाला। I'll just click on it, I'll go to split column, I'll go to delimiter,
प्लस एंड आई विल से दैट ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर, हर बार जब प्लस आए ना स्प्लिट कर दो, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। अब जाहिर सी बात है, इसमें क्या हुआ है, कहीं कहीं पर नल आया है, नल कहां कहां पर आएगा, नल विल कम इन ऑल दोज केसेस इन विच देयर इज नो थर्ड रियर कैमरा एट ऑल। भाई यहां पर दो ही कैमरे थे तो तीसरा था नहीं, तो नल आ गया यहां पर, इसके पास तीसरा था तो तीसरा रख दिया उसने, राइट। और अब मैं देख रहा हूं सेकंड कैमरा में कहीं पर नल नहीं है, मतलब ऑल दी सेल फोन्स हैव एटलीस्ट टू रियर कैमरास। अग्री? नाउ if I just click on this column, underscore underscore one, right, underscore one, अंडरस्कोर वन मतलब पहला रियर, और प्रॉब्ली अंडरस्कोर भी जरूरत नहीं है, रियर वन, आई गो फॉर रियर टू, दिस इज माई रियर टू, है ना, दिस इज माई रियर टू, एंड दिस इज माई रियर थ्री, रियर वन, रियर टू, रियर थ्री। अब रियर वन में क्या करता हूं मैं, I do not want this OIS, MP. I don't think this data is very, very useful for us. What I'll do is, मैं ये M से पहले वाले सारे के सारे टेक्स्ट क्या कर देता हूं, एक काम करता हूं, सबसे पहले तो मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूं एक साथ और बोलता हूं कि सबसे पहले तो आप लोग क्या हो जाइए, ट्रिम हो जाइए। ट्रिम हो जाइए मतलब आपके आगे और ठीक पीछे अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस है तो वो हट जाएगा। देखिए इसमें था, हट गया वो, है ना। नाउ इन्हीं तीनों में मैं क्या बोलता हूं, इन्हीं तीनों कॉलम में I selected all the three columns and I'm doing it on all the three columns together. And what am I doing? I'm saying that extract only the numerical part of the data. Rest everything भूल जाइए. So I said extract मैंने बोला text before a delimiter. और what is the delimiter? What is the delimiter that I should give? अगर मेरे को इन तीनों कॉलम में सिर्फ नंबर्स चाहिए तो कौन सा डेलीमीटर यूज करो, क्या डेलीमीटर में मैं क्या डालू यहां पर, टेल मी, what should I put in delimiter over here? Think about it. Yes, you can put your answer in the chat box. Nothing. Nothing में अगर डेलीमीटर में कुछ नथिंग ही नहीं है, देन इन दैट केस स्प्लिट ही नहीं हो, उसको पता कैसे चलेगा कि कहां से मैं एक्सट्रैक्ट करूं मैं चीजों को। M, एग्जैक्टली आई पुट M ओवर हियर। सो M के लेफ्ट में जितना भी है ना डेलीमीटर, उसने क्या, मैंने क्या कर रहा है, टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, इस डेलीमीटर से पहले जो भी चीज है वो निकाल लो आप। और फिलहाल ये टेक्स्ट कॉलम की गिनती में आ रहा है बिकॉज नंबर भी है और टेक्स्ट भी है यहां पर, isn't it? If I click on OK, they'll all become numerical column, right? And now I'll click on ABC over here and I'll say that this is a whole number. I'll click on ABC over here and I'll say that this is also a whole number. I'll click on ABC over here and I'll say that this is also a whole number. Can I say I've handled camera? This is the first camera in megapixel, second camera in megapixel, and third camera if it exists in megapixel. This is my front camera. Can I say this? Isn't it? अब यहां पर मैं आता हूं बैटरी में। इफ यू लुक एट बैटरी, आई थिंक A16 Bionic chip, 6 core processor. I think I just want to keep things about battery over here in this column. मैं क्या करता हूं, ये जो सेल है ना, ये सेल को इग्नोर कर देता हूं। I'll remove that. So I'll just copy this text. Why am I copying this? Because ultimately कॉलम में सेलेक्ट करने वाला हूं, होम टैब में जाने वाला हूं। आई थिंक यहां पर भी मेरे ख्याल से रिप्लेस की का ऑप्शन तो होना चाहिए, बट नहीं है, कोई बात नहीं। आई गो टू होम टैब एंड आई गो टू रिप्लेस वैल्यूज, है ना, और रिप्लेस वैल्यूज में जो कॉपी टेक्स्ट है वो पूरा डाल दूंगा और मैं बोलूंगा रिप्लेस दिस विद व्हाट, एब्सोल्युटली नथिंग। सो टेक्स्ट क्या हो गया, गायब हो गया। सिमिलरली फिर मैं क्या करता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं क्योंकि वहां A15 था इसलिए बच गया ये, बाकी A16 वाले सारे गायब हो गए।
इसको राइट क्लिक करता हूं, मैं कॉपी करता हूं. आई कैन कॉपी द टेक्स्ट ओवर हियर. आई क्लिक ओवर हियर ऑन दिस कॉलम. इस कॉलम पे क्लिक करता हूं मैं. आई गो टू रिप्लेस वैल्यूज. इस टेक्स्ट को वैल्यू टू फाइंड में डाल देता हूं. एंड आई रिप्लेस इट विथ व्हाट? एब्सोल्युटली नथिंग. Right, this is the case over here. Now this is my battery. बैटरी की साइज भी मुझे समझ में आ रही है. दैट बैटरीज यूनिट इज M capital A H. I have no idea what this is, but this appears to be the what? The unit of battery. So I'll just click on it. Now everything is fine. यहां पर भी मुझे अब क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है. मेरे को ये 5100 ही रखना है ना. अल्टीमेटली दैट्स व्हाट आई वांट. एमएच का करूंगा क्या मैं? एमएच जबरदस्ती इस कॉलम को टेक्स्ट कॉलम बना रहा है. I just want the number over here, isn't it? So I'll just do one thing. मैं ट्रांसफॉर्म टैब में आता हूं. पहले तो ट्रिम कर लो भाई. ट्रिम की जरूरत है क्या? जरूरत तो नहीं थी. यहां पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं. एक्सट्रैक्ट इज टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर. एंड व्हाट इज द डेलीमीटर ओवर हियर? अब यहां पर मैं एक और चीज कर सकता हूं. Instead of extracting text based on delimiter, I could see all of them are 4 digit. So मैं लेंथ की बेसिस पे भी एक्सट्रैक्शन कर सकता हूं. ओके, एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन लेंथ और द फर्स्ट कैरेक्टर. अच्छा, लेंथ करता हूं ना, तो लेंथ इज जस्ट गोइंग टू गिव मी द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग ओवर हियर. इफ आई लेट्स से सेलेक्ट लेंथ, इट्स गोइंग टू गिव मी द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग. सो 16 कैरेक्टर्स थे उस पूरी जो भी चीज वहां लिखी हुई थी उसमें. ओके, ऑलराइट. एंड एक्सट्रैक्ट में क्लिक करता हूं और इस बार बोलता हूं फर्स्ट कैरेक्टर्स. फर्स्ट कैरेक्टर्स मतलब गिव मी द फर्स्ट कैरेक्टर्स ओवर हियर. एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स डू आई वांट? फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स, बिकॉज फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स आर दी नंबर ओवर हियर. उसी नंबर की मुझे जरूरत है. आई क्लिक ऑन ओके. Now which means that rest of the other portion is absolutely gone. I don't have to worry about it. I'll click on ABC here and I will make it a whole number. Right, this is my battery. बैटरी भी सॉर्ट आउट हो गया भाई. अब धीरे धीरे करके सारे कॉलम्स को मैंने सॉर्ट आउट कर लिया. ऑलमोस्ट ऑल दी कॉलम्स आर सॉर्टेड टिल बैटरी. रेटिंग्स में आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर. द रेटिंग्स आर गिवन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली. और रेटिंग्स दी हुई हैं. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रिक्वायर्ड ओवर हियर. But when it comes to number of ratings is again giving me all these ratings करके मेरे को क्या कर रहा है यहाँ पर? I think it's basically giving me that particular phrase rating repeatedly. I'll again go to extract. I'll say that please extract text before delimiter, and the delimiter is space. I'll just press space button over here. Okay, then in that case I'll get the number of ratings over here. Right, that space or rating word is gone now. I'll get the number of ratings. All I need to do is to click on this format over here, trim it up if required. Then I'll click on this data type ABC. And अब मैं SQL को बताना जरूरी हो गया ना कि भाई अब ये टेक्सचुअल डेटा नहीं रहा, इट्स न्यूमेरिकल डेटा. राइट, बिकॉज टेक्स्ट तो हटा चुका हूं उसमें से. सो मैंने इसको बोल दिया भाई ये होल नंबर है. राइट, सॉरी, SQL बोल दिया मैंने, पावर बीआई को. ओके, सिमिलरली यहां पर भी अब मैं वही करने वाला हूं. आई से दैट दिस इज नंबर ऑफ रिव्यूज. आई से दैट रिव्यूज वाले पार्ट को हटाना है. आई गो फॉर एक्सट्रैक्ट. आई गो फॉर टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर एंड द डेलीमीटर इज स्पेस. एज यू कैन सी 1485 space reviews. So text before space will come up over here, and I'll just over here space. Okay, now I have this as my review. Are we clear with this? This is my reviews. Now पूरा का पूरा डेटा क्या हो गया है? Clean हो गया है. The entire data is now clean. The only thing which was remaining was to convert. एक बार बस चेक कर लूं इसके आसपास कहीं स्पेस तो नहीं है. फॉर्मेट में जाता हूं, ट्रिम करता हूं. Right, and I'll click on this ABC and I'll say that convert this into a whole number. My data is ready. Right, and can you understand what is the level of effort that we have taken just to ready the data, just to prepare the data? I haven't even started my analysis over here.
But yes, my cleaning actually was dependent on what kind of analysis I want to do. So I knew what kind of analysis I wanted to do. Hence, I converted all of them into numbers. All of them into numbers. Wherever I should have converted them, I have converted them into numbers. Now I can do many things over here. I can I can do an EDA on this data, a simple understanding of the data. I can do that. Or I can understand that what is the I can predict, I can run an ML model over here, machine learning model, to predict the original price of the data based on the rest of the other conditions, right? All these things can be done, right? Now there are other features in Power Query Editor as well. We can add column over here as well. We can add columns conditionally as well, right? What kind of condition? Let me go for Mm, 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 mm. Right. Let's say I just want to calculate ratings or battery. I just want to have a conditional thing, but I think इस data में मुझे वो condition बनाने की मिल नहीं रही है. But no worries, I can do that, right? For example, if I, let's say, want to just do one thing, that offer price is no offer price. This is something that we can do. Na? Original price minus offer price is going to give me the exact discount that I've given over here. This discount is in percentage terms. I want to know the absolute discount as well, right? Then I can go for something called as conditional column. So in add column, I'll go for conditional column, and conditional column I need to mention the condition over here. What is the condition? Right, first of all I have to give the column name, and the name of the column is discount value. Discount value, because this is the discount I am getting. Right. What do I need to do? I need to go for original price operator. Right. Okay. This is based on certain conditions over here. Sorry, not possible. Not possible. I think subtracting two columns is not possible. I think that comes in DAX. That comes in DAX over here. I'm so sorry. I can create a measure over here, and the case over here. Conditional column means it basically gives the categories to various cases over here. For example, let's say let me just change it. If I go for 12, can I just see the RAM? 12 is brilliant RAM over here, right? Okay. And I think 4 GB RAM भी अच्छा है, 8 GB RAM भी अच्छा है, 6 भी अच्छा है. But anything above 6, like 8, either 6 or 8 is strong RAM. 8 and above is very strong RAM, right? And anything less than 4 is average. Anything less than 6 is average. Okay. Let me do that. Now, if I want to create a column which will categorize each and every row, please listen carefully, which will categorize each and every row based on the RAM, based on the RAM, right? Then I can do that. आई थिंक रैम से ज्यादा अच्छा हम प्राइस पे करते हैं. आई थिंक ऑफर प्राइस से ज्यादा ज्यादा रिलेट करेंगे ना हम, कौन कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा. आई थिंक इट्स वेरी इजी बिकॉज एनीथिंग लेस देन 10,000 इज, लेट्स से, चीप, लो प्राइस बोलना चाहिए. एनीथिंग बिटवीन 10 to 15,000 इज मीडियम प्राइस, or anything about 20,000 is high price. So 10 to 20,000, less than 10,000, 20,000 and above, ये तीन कैटेगरी में डालते हैं. लेट्स डू दैट. फाइनल इसी को करते हैं. ऑफर प्राइस में मैं एक कंडीशन, ऑफर प्राइस के बेसिस पर मैं कंडीशनल कॉलम ऐड कर रहा हूं, बिकॉज आई एम एन ऐड कॉलम टैब ओवर हियर. आई विल ऐड अ कंडीशनल कॉलम, एंड द नेम ऑफ दैट कॉलम इज प्राइस कैटेगरी. Price category, and I'll have to go for the condition, and the condition is if offer price is less than, or is less than value which is 10,000. Okay, the value which is 10,000, then output is
the value over here, okay, the value over here, then what is the output? Output is low price. Okay, this is one. ये मेरी पहली condition है. If offer price is less than this, then this. Add a clause. If offer price is, अच्छा, इस बिटवीन वाली कंडीशन नहीं है मेरी यहां पर, बट नो वरीज, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, कोई बात नहीं. देन इफ आई से इफ इट इज ग्रेटर देन 20,000, right, 20,000, then high price. Okay, I can add another clause, but if this is true, then low price. If this is true, then high price. Else, यहां पर एल्स की कंडीशन डाल देता हूं. तीसरी कंडीशन हमेशा एल्स में ही आ जाएगी ना. एल्स का मतलब है अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आई विल गो फॉर दिस कंडीशन ओवर हियर, एंड हियर आई विल मेंशन मीडियम प्राइस. लो प्राइस्ड, एक्चुअली डी आना चाहिए ना, लो प्राइस्ड. दिस इज मीडियम प्राइस्ड. नाउ इफ आई क्लिक ऑन ओके, there is another column which got created, price category, which is high priced, medium priced, and low priced. So I can create columns like this. I can create index column as well. Index column मतलब serial number हम देते थे ना, 1 2 3 4 5 6, वही चीज है यहाँ पर. It's saying that from 0, from 1. I don't think I'm not interested over here. I can duplicate a column over here. For example, if I want to duplicate this column, I'll just click on it and the column got duplicated. Just to show you, I'll just right click and remove this. Right. Then I think from text, I think extract we have seen, as I've mentioned, a lot of things are there. Transform में जो extract tab है, वही चीज मेरा ये extract कर रहा है. The same format thing, whatever format is doing, the same thing is being done with format over here. As I had said before, that Power BI में एक ही चीज करने के बहुत सारे अलग अलग जगहों से हो सकता है, वही चीज क्वेरी एडिटर में भी हो रही. So this is how I can add column. I can add a date and time column if at all it is required. Okay, and plenty of things are there. We can go for text analytics over here, but in that case it'll ask me to sign in, और अभी नहीं करते हैं इसमें. Okay, right. I'll take you guys to the next possible portion over here, which is view. Now view क्या करता है? Will help me understand my data as well. Now, if you look at view, a lot of check boxes are there which are not being checked. Okay. Now, if I check on this, some additional data gets displayed. जैसे अगर मैंने कॉलम क्वालिटी पे क्लिक कर दिया तो ये कॉलम की क्वालिटी दिखा देगा, हर कॉलम की क्वालिटी दिखा देगा. दैट इज वैलिड, मतलब कितना डेटा इस कॉलम में आ रहा है जो वैलिड है, कितना एरर वाला है, कितना एम्प्टी है. तो ये बहुत बढ़िया कॉलम है, कोई एरर नहीं है, कुछ एम्प्टी नहीं है. Similarly, ये भी बहुत बढ़िया कॉलम है, no error, nothing is empty. Indicates that we have done well in our data cleaning. No error, no empty. No error, no empty. No error, no empty. यहां पर उसने 12% empty बताया, which is okay, क्योंकि 12% उन 12% डेटा का डेटा पॉइंट ही नहीं है मेरे पास. मेरे पास उसकी नल वैल्यू डालने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था मेरे पास, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज ही नहीं है उनकी. I do not have their values over here at all, isn't it? Then next column is also nice, nothing empty over here. This column is a bit of a problem, expandable. Half of the column, for half of the column, I do not have this data. In predictive modeling, ऐसे column मैं हटा ही देता हूँ. Because if half of my data is not there, the machine learning model will get confused only. Okay, so if I'm going to use this data later on after Power BI into something, into running a ML level model, then in that case I'll avoid this column at all, क्योंकि ये कॉलम जो है ना मेरी हेल्प करने से ज्यादा मेरे मॉडल को कंफ्यूज करेगा. ओके, स्क्रीन साइज बढ़िया डेटा है, डिस्प्ले साइज में भी एम्प्टी 31% आया, इस पे भी कुछ नहीं करा जा सकता बिकॉज डिस्प्ले टाइप मेरे पास कुछ चीजों का था, कुछ चीजों का नहीं था. रियर कैमरा, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. ना एक और प्रॉब्लम है भाई, रियर कैमरा 73% ऑफ द डेटा इज एम्प्टी ओवर हियर.
मतलब 73% of my data points over here doesn't have a third rear camera, which is okay with me. चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. And then I checked for the other portions over here, and I think this is how we can understand what kind of data are we looking at. Right? This is column quality. If I uncheck this, the quality is gone. We can also go for column distribution. It's going to give me the distribution of the column. Right? It's going to give me, is the column normally distributed? What is the distribution over here? We can see there are 2 distinct values, 3 distinct values, 8 distinct, 1 unique value, all that kind of stuff. Okay, all these things are there. हाँ, बस जो कॉलम बस बनाया है ना, उसकी आपको, उसने यहाँ पर रीड नहीं करा उस कॉलम को, और उसने उस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया. You can also go for column profile. Column profile is nothing but distribution and the same thing. It's a merger of column quality and column distribution. So not a big fan of this one. Monospace, देखता हूँ, what do you monospace is basically giving you a different font over here, which I kind of don't like. That's it. है ना? Now in the view, we can go to a certain column straight away. In view, we can go to a certain column. We can jump to a column straight away. Let's say at times I need to deal with data which has, let's say, 54 columns and 5,000 rows, or let's say 50,000 rows. In that case, I need to go to a column. So I can probably avoid that scrolling towards the right. I can straight away go to the column over here and understand. Let's say, for example, I want to go to battery. If I click on battery, okay, it'll take me straight away to battery. बीच के सारी चीजें मिस कर गया. If I go to column, go to, let's say, camera rear 2, if I click on OK, it'll take me to that particular column. Are we clear with this? That's the point. Now, always allow what? Right now, it's parameters are always allowed. It's okay, no problem over here. Let's not worry about the advanced editor right now because it deals with something called as mQuery, जो अभी थोड़ा सा heavy जाएगी हमें. Let's not worry about mQuery right now. mQuery is quite see, mQuery, what is mQuery? mQuery is nothing but, as you can see, these are all the steps that you have done. So whenever you click on a button on Power BI, how does Power BI make that change? Power BI makes that change because in backend there is a code running. That code does the work. mQuery is that code only. So it's the backend code. It's the code of the backend in Power BI. Now, if you want to change it, you can change it, but you ought to be very, very clear with the coding point over here, because if you messed it up, then that column got messed up, or that particular portion of your work in Power Query Editor will get messed up. So we'll move on to this later on, right? Frankly speaking, I'm not an expert in mQuery either, right? Never worried about it because I think एक click में ही काम हो रहा है तो query के पे क्यों ज़्यादा जाना वहाँ पर, okay? All these kind of things are there, right? Okay, so I think this is majorly we have seen what Power Query Editor can be done. By no means I've told you each and everything. For example, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बची हुई, जैसे move means I can move a certain column towards left or right. For example, I want, sir, ये जो है ना, ये जो column है ना, this column ratings and review, I want this column, the ratings, the number of ratings and review, I want to move them left. Let's move them to the beginning only, sir. So I moved them to the beginning. So reviews कहाँ पहुंच गया? Beginning में पहुंच गया. Right, and where are the rest of them? Oops, हाँ, ये तीनों कॉलम मेरे यहाँ पर पहुंच गए बिगनिंग में. अब मैं यहाँ क्या करता हूँ? I'll go to move and थोड़ा थोड़ा राइट में मूव करके I'll move it to the right and I'll move it to the right again. So at least the brand, the product, its rating, number of ratings given, number of reviews given, whatever is the product color, offer price, original price, discount, expandable, and then we can go for price category over here. Okay. Similarly, we can look into discount and see on which product we have high discount. For example, anything about 25% is high discount. Anything between, well, anything about 20% should be high discount. So 20% and above, high discount. 10 to 20% probably is medium discount. Less than 10% is low discount. I can do the same thing over here. Right? और भी बहुत सारी चीजें करी जा सकती है. For example, I could see
That brand column over here, Redmi, some of them are in lower cases, some of them are in upper cases. What I'll do is I'll convert all of them into, I can go to format, yes, and I can convert all of them either into lower cases, all of them are into lower cases, or I can convert all of them into upper cases, or I can convert all of them into capitalize each word. Matlab, first word will be capitalized, rest of them will be nothing but small. I think this makes more sense over here, so I'll keep it like that, right? And I think the same thing has happened over here as well, right? There is something which is pivot and unpivot columns, but I think I'm keeping this for some other part. This replace value does the same thing as what replace value in home tab does. Repetition. Okay. So majorly 70-75% of the power of the Power Query editor is seen in this session, in these two sessions, today's and yesterday's. Okay. Now once I'm done, I can click on this and close and apply. And now whatever I've done, I think the same thing gets applied on my data, and my data will be stored in that particular format, right? Now the data is stored in that particular format. You can see that this is how the data is stored. Fair enough. I think this is what I wanted. Now I can go to my analytics and I can do a number of things. For example, I can run a bar chart, and in the next session I'll come to this only. I think thought about, I think we'll learn the bar chart over here, and I'll go to final data and I'll say that let's look at the brand. Okay, and let's look at how many reviews have we received for each and every brand. So I can see that Motorola has highest the number of reviews it has received, followed by Redmi, Apple, OnePlus, Poco. Now I can go for which one has got the better rating over here. I think rating is over here. Yeah, I'll move to rating. So I can now see that the rating of Motorola, I'll just do one thing. I'll go to focus mode. That way, I'm using the entire space. I can see Motorola, Redmi, Vivo, Realme. Best rating has been received by Motorola, which is very, very surprising because, well, there are good, products. So I think this is sum of rating. Oops. I think I should go for average rating over here. Now it makes sense. No, average rating of Apple is highest, which is like 4.6. Vivo is 4.46, followed by OnePlus. So Vivo and OnePlus are the brands rating wise are doing slightly better than the other brands over here after Apple. Okay, right. And I think apart from rating, we can also see that what is the average discount offered by various brands. Oh, it's not sum of discount. I'm saying average discount. So I think Poco offers highest Apple discount ही नहीं देता है, which is understandable, isn't it? Poco gives very good discount. Samsung gives good discount again. Realme less discount. Apple and Redmi are the ones which are giving me the least discounts. Right now, from a data which is in a very raw format present on a web link, we can do something like this. Okay. Monday onwards, we'll start looking at the visualization. How can we create visualization? What kind of visualization can we create? And we'll start looking at dashboard. I think we'll start with the same data because we have done the data over here. Data ka analysis kar liya. Let's try and do a lot of analysis. Whatever I can analyze about the entire data, and let me see it over there. Okay. So let me do one thing. I'll just save this file. Okay. I'll save this. I don't have to save as because I've already saved the name of the file over here. And now I can close it up. Okay. And I guess this is where, guys, we'll have to stop the session today as well. Okay. I hope I've added some value to your understanding of Power BI and Power Query Editor. And yeah, thank you very much for participating over here. Thank you very much for being a regular audience. Refer this the live series to somebody who is in need, who also can benefit just like you are benefiting. And let's reach to as many people as possible. And thank you very much for joining the session.
If you have not subscribed my channel, please do consider liking, subscribing, and sharing the content. It'll help me greatly, right? And it'll help me grow slightly faster. Okay. Thanks a lot, guys. Thank you very much. I'll end the session now. But if you come across any doubt after the session, please make a note of it. Please ask it on Monday. Next session will be on Monday. Weekends, we are on a break. All right, guys. Right, then allow me to end this session over here. I'll on comment box, I'll put in all the resources for this thing, the PBX file and the link over there as well. Okay. See you guys. Bye bye. Thank you.